Krishna Krishna Bhutale Himate Bhakti Vedanta Swami Itinayani Namaste Saraswati Devi Gauravani Sachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishitari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Srivasadi Gaura Patakavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Shyam Sundar Shri Radhe, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jai 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Guru Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnav Devi ki jai. And dear Vedanshi ki jai ho. Hare Krishna. Hare Krishna and Pranam. Can you hear me, Ronnie Prabhu? I'm just standing. Can you hear me okay? Yes, perfect. Yes, Prabhuji. Okay, thank you. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल आप सब लोगों का निर्जला एकादशी का व्रत ठीक से रहा होगा और आप सब लोगों ने ठीक से निर्जला किया और we all felt spiritually enlivened to keep some austerity for the pleasure of Krishna. और ये जितने भी व्रत होते हैं उनका मेन उद्देश्य ऑस्टेरिटी करना नहीं होता है, बल्कि हाँ मेन उद्देश्य है कि खाने से पीने से इनसे ध्यान हटा के और हम जो है भगवान के श्रवण में कीर्तन में और ध्यान करें. दैट इज द मेन पर्पस. सो और आप पाएंगे कि मोस्टली इट इज आवर माइंड which plays games with us. So you're not eaten, you're hungry, water has not gone, है ना. और यूजुअली मैं सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से पहले मैं पानी पी लेता हूँ जिस दिन निर्जला रखना होता है. बट देर रात से एक डिवोटी का मैसेज आया हुआ था कि क्या करें और हम व्रत नहीं रख सकते हैं. और ना उन्होंने मैसेज बहुत लेट किया था और मुझे पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि मैं उनको ये भी नहीं बता सकता कि सुबह उठ के आप करना. तो इस बार सुबह उठ के भी नहीं पिया मैं ऐसे ग्लानि में रहा कि वो भी बेचारे रह गए और उनको भी मैं नहीं बता पाया. और उन्हीं डिवोटी की कृपा से सो आई कुड कीप इट बिकॉज लाइक दिस. बट आप पाएंगे कि मोस्टली कि इट इज अ माइंड विच प्लेज गेम विद अस, कि खाया नहीं. और यूजुअली आप पाएंगे कई बार भक्त ये भी शेयर करते हैं कि किस तरह से ये व्रत रखने से इज गुड फॉर योर बॉडी. बट उसमें मेरा मत है कि वो सब नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो मेंटेलिटी हमारे अंदर आ जाती है, ओ आई एम कीपिंग द वर्थ सो इट विल वेरी गुड फॉर माई बॉडी ऑल्सो, लाइक दिस, बिकॉज सो ड्राई फास्ट और समथिंग लाइक दिस. देयर आर मेनी बेनिफिट्स ड्राई फास्ट के, बिकॉज द बॉडी जो है इट गोज इनटू मेंटेनेंस मोड. आप समझ सकते हैं कि जैसे किचन में या फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, तो एक दिन बोला कि प्रोडक्शन नहीं करनी, अब क्या करना है. सो जिस दिन प्रोडक्शन नहीं होती उस दिन फैक्ट्री में दे विल डू मेंटेनेंस वर्क. सो बॉडी गोज इनटू मेंटेनेंस वर्क एंड डज मेंटेनेंस, बट दैट इज अ साइड बेनिफिट. सो मेन बेनिफिट इज कि वी कीप एंड अंडरस्टैंड and get a little realization कि I am a soul, I am not a body, and without body needs also I can spend one day for Krishna's pleasure, like this. So मेरे को ये लगता है कि आगे से अगली एकादशी भी ठीक ठाक रखनी चाहिए. नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ मेरे लिए एकादशी में और नॉर्मल जो एकादशी आती हैं और नॉर्मल डे में कोई फर्क ही नहीं रहता, सिर्फ प्रसादम इज डिफरेंट. सो दिस
we should keep little austerity for Krishna's pleasure. Okay, so we can show, Rani Prabhu. We are how many? Oh, we are 14 of us right now, and okay, 9 have attempted. and 9 have attempted. It is Atul Prabhu, 100%, Giraj Das, then Anshi Mataji, then Sham Prabhu, then Pinky Mataji, okay, then Anupma Mataji, then Atharv, then Vijay Mataji, then Ankur Sharma Prabhu. He's attempting. Okay. 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 So you can take it outside and we will read if you are not able to. I have a little pain, but I can stand, but mic won't come there. Okay, so we can read and you can join our mobile. I keep it here, it's convenient for me, but there is no mic here. That's okay. Then we can read the shloka and the translation purport, and you can. Okay. There's no in between. I was told something. Yes. So, Hare Krishna. So we will start. How many have attempted? 9 only. So today we are 17 now. So please, we will do Mangalacharan. तब तक जिन्होंने कुछ attempt नहीं किया है, please कर लीजिए. It is a very good revision. मैं देखता हूँ कि it's a very good revision. Please करना. इतने सारे भक्त लगे हैं क्वेश्चन बनाने में, आपकी क्विज ओके करने में, उसको पोस्ट करने में. So उनकी भी सेवा जो है सफल हो. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाली. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा. ओके. सो हम लोगों ने कल पढ़ा 1 घंटा, तो मेरे ख्याल से सब लोग ही रहे साथ में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके सबको घर में कुछ ना कुछ काम होगा. हम लोग 9:15 9:30 तक पढ़ते रहे थे. और तो अभी जो है हमने कल पढ़ा था कैसे कि कृष्णा ने ही इंस्पायर्ड अर्जुन, और अर्जुन ने टैक्टफुली ही गेव ए पनिशमेंट टू अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने उसके मनी ले ली और आधे से काट दिया बाल. तो वो इट इज एज गुड फॉर ए क्षत्रिय एज किलिंग. तो ही फुलफिल्ड कृष्णास डिजायर. उसके बाद जो है हमने 8वें चैप्टर पे आए. इट्स ए इम्पोर्टेंट चैप्टर, कुंती महारानी प्रेयर्स. और तो इट इज जस्ट शोइंग, जो इनिशियल चैप्टर थे सारे के सारे, सॉरी जो श्लोका थे, दे जस्ट शोड द बैकग्राउंड, the background of how Krishna was there and how Krishna wanted to leave and और हमने ये भी कल डिस्कस किया था कैसे युधिष्ठिर जो है अलग अलग यज्ञ करते रहते थे ताकि कृष्ण जो है वो द्वारका से हस्तिनापुर आते रहे. और इसी के बीच जब वो जाने लगे थे वापस, तो उन्होंने देखा कि वो जो अश्वत्थामा है, he has again sent a Brahmastra. And we read that wonderful Pahi Pahi, verse, Uttara's cry, जो हमने डिस्कस किया था कि it's a good verse to read. बोलना प्रभु जी वो श्लोक. So जब भी हम कठिनाई में होते हैं तो वो हम श्लोक बोल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त ने बोला है, उत्तरा ने. तो वो it has great value. उत्तरा वाचा पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगतपते नान्यम त्वद अभ्यम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम. तो इसको याद कर सकते हैं, और जब कठिनाई में होते हैं
सो वो हम ये श्लोक जो है ये हम भगवान के सामने बोल सकते हैं like this. Okay, come to the Prabhu index. Okay, then we read कि किस तरह से वो जो भगवान है वो उनको वो ब्रह्मास्त्र देख के so what he does, he comes and he enters the womb of Uttara. कहाँ तक किया था हमने प्रभु, नीचे करना? Yes, Prabhu. 17th shloka, and then एक just hold, just 14 दिखाइए एक. yes, Prabhu. 17th to the last one. So जो अश्वत्थामा है, he wanted to make the whole planet a पांडवा. हमने पढ़ा था कि भाई पांडवों से रहित हो जाए, उनका वंश ही ना रहे कोई भी, हाँ, like this. और तो वो जो है उसके बाद जो कृष्ण ने उनको बचाया, हाँ, और ये हम 2-3 श्लोक में ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, so we get into the rhythm of the chapter. The Lord of Supreme Mysticism, Shri Krishna, resides within everyone's heart as Paramatma. As such, just to protect the progeny of Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his personal energy. भगवान बोलते भी हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना, ये हम बहुत बार पढ़ते हैं अर्जुनाचार्य का भी कि कृष्णा personally saves, he can tell, he can do from the distance also, but to pure devotees he always interferes personally. We see in the case of Gajendra also, so many cases we see. For Shana, glory of Brigud family. Although the supreme Brahmastra weapon released by Ashwathama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu, Lord Krishna. तो आप पाएंगे कभी-कभी जो है इनको कृष्ण को आप पाएंगे 10th canto के अंदर भी he is addressed as Vishnu. तो इसलिए बोलते हैं so that we get reminded, हमें याद रहे कि हम किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की बात हो रही है. इसलिए many times बीच में he is addressed as Vishnu. O Brahmanas, do not think that this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. Thus saved from the radiation of the Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her 5 sons and Draupadi addressed Lord Krishna as he started for home. Okay, so now उनकी जो है प्रेयर स्टार्ट होती है कुंती महारानी की. कुंते उवाचा नमस्ते पुरुषन्त्वाद्यम् ईश्वरं प्राकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम्. कितना सुंदर है, देखिए, नमस्ते पुरुषं त्वद्यम् ईश्वरं प्राकृते परम् अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम्. हम भी कहते हैं बाहिर नरसिंहा हृदय अंतर, like this. Kunti uvacha, Srimati Kunti said, Namaste, let me bow down. Purusham, the supreme person. Tva, you. Adyam, the original. Ishwaram, the controller. Prakriti, of the material cosmos. Param, beyond. Alakshyam, the invisible. Sarva, all. Bhutana, of living beings. Anta, within. Bahir, without. Avasthitam, existing. Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of material world. You are existing both within and without. Everything. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. ये भगवद गीता में देखते हैं, भगवान बोलते हैं कि जैसे माला के अंदर जो धागा है दिखता नहीं है, मणियां दिखती हैं, मोती दिखते हैं, उसी तरह से मैं दिखता नहीं हूँ. तो इसी तरह से so you'll find ये श्लोकास हैं और ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, they understand his position very clearly. Purport. Srimati Kunti Devi was quite aware that Krishna is the supreme personality of Godhead, although he was playing the part of a nephew.
Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. हाँ, क्योंकि वो तो उनके भतीजे थे. So कह रहे हैं कि she was an enlightened lady, and she would not अपने भतीजे को इस तरह से प्रणाम नहीं करेंगी, because she understand who Krishna is, because he is much younger to her. Therefore, she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. Although all living entities are transcendental, they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. In the Vedas, therefore, he is described as a chief among all the living entities. Nityo Nityanam Chetnas Chetnam. Then again, he is addressed as Ishvara, or the controller. The living entities or the demigods like Chandra, Surya are also to some extent Ishvara, but none of them is the supreme Ishvara or the ultimate controller. He is the Parameshwar or the super soul. He is both within and without. Although he was present before Srimati Kunti as a nephew, he was also within her and everyone else. In the Bhagavad Gita 15.15, the Lord says, I am situated in everyone's heart, and only due to me, one remembers and forgets and is cognizant, etc. Through all the Vedas, I am to be known because I am the compiler of the Vedas and I am the teacher of the Vedanta. So, a very important shloka of Bhagavad Gita, जिसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि Bhagavad Gita gives principle and the details comes in Srimad Bhagavatam. All the shlokas you will find, you will be able to relate. Queen Kunti affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. The Lord is, so as to speak, a puzzle for the common man. Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within her womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. Kunti was puzzled. Kunti herself was puzzled about whether Sri Krishna is all pervasive or localized. In fact, he is both, but he reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain is called Maya, energy of the Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious soul. It is explained as follows. So we understand कि किस तरह से Vedesh sarve raham eva vedyo. So that from everything Krishna is to be known, and he is present. क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र चला तो उनको दिखा कुंती को कि कैसे जो कृष्ण है सामने खड़े हैं, बट सामने खड़े होते हुए भी अपनी एक्सपेंशन से he entered the womb of Uttara, और उसको जो बेबी था परीक्षित in the womb of mother Uttara उसको बचाया. So she is saying I can't understand whether you are all pervasive or you are localized. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान है वो दोनों ही है. He is localized also, he is all pervasive also. इसका उदाहरण क्या देते हैं शास्त्र? सूर्य का. सूर्य is localized, is a ग्रह, सूर्यदेव is there, it is in one planet, but अपने प्रकाश से, अपनी एनर्जी से, he is also everywhere. But just because, but the everywhere aspect is not as great as the localized aspect. है ना? कि हम बोले कि that everywhere aspect is bigger. No, the bigger aspect is the localized, from where जिसका जो स्त्रोत्र है, so that part is more important than the all pervasive Brahmajyoti, like this. Yes, Prabhu. Can you put the next shloka? Maya Javanika Achanam Agya Adokshajam Avyayam Na Lakshe Mudrisha Nato Natya Dharo Yatha. Maya, Prabhu, can you read? Can you read? Yes. Yeah, just read. Maya deluding, Javanika curtain, Achannam covered by Agya ignorant, Adhokshajam beyond the range of material conception transcendental, Avyayam irreproachable, no, not Lakshay observed, Mudha Drisha by the foolish observer, Natah
Artist Natyadhara dressed as a player, Yatha as being beyond the range of limited sense perception. You are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. Hmm. This the same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Ram, Narsimha, Varaha, and or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. And we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Shri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. He killed the Putna witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities to the Lord of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihas, histories, and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the shape of Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personality as Vyas, Devala, Asit, Narad, Madhav, Shankar, Ramanuj, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jeev Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literatures. And yet, there is a class of men with demoniac mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and the present. Such persons could not recognize Lord Shri Krishna even when he was present before them. Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the Supreme Lord. Such persons are like the modern scientist. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as adhokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the women class, which are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temples, mosques, or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such holy places. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temple, mosques, or churches, is as beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon Him by active service. Go ahead, Prabhu. Go ahead. Read the next. Tatha Paramahamsanam Muninam Amalatmanam Manam Bhakti Yoga Vidhanartham Katham Pashyema Hi Striya Tatha. Besides that, Paramahansana Hansanam of the advanced transcendentalists, Muninam,
of the great philosophers or mental speculators. Amal Atmanam. Atmanam. Those whose mind are competent to discern between spirit and matter. Bhakti Yog, the science of devotional service. Vidhanartham, for executing. Katham, how. Pashyema, can observe. He, certainly. Striya, woman. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we, women, know you perfectly? Even the great philosophical speculators cannot have access to the regions of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of the purpose. And for this reason only, women generally assemble in great numbers in any sort of religious functions. In every country and in every sect of religion, it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. तो ये देख सकते हैं, ये हमारी भक्ति साधना भक्ति के लिए भी ये जो जितना हमने पढ़ा ये सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इट इज नॉट कि जस्ट बाय बिकमिंग ए वेरी लर्नेड स्कॉलर दैट we can impress Krishna. We can just satisfy our intellectualism, but basically one needs to be sincere. That is the important thing, is to be sincere, or and also one needs to be simple at heart. जितना अपने हार्ट को हम कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे, हम पाएंगे कि भक्ति में आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है. If we are unable to have proper relationship with the devotees, we are unable to have proper relationship with Acharya, with our Guru, with our Shiksha Guru, Diksha Guru, then we'll find, if you see faults in them, we find, because in every devotee's life, a teenage situation comes. You understand teenage situation? Teenage situation is जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, then they understand, oh, हमें समझ में आ गया. Now I don't need protection of my parents because I can think, because जो बच्चा छोटा होता है उसको कुछ नहीं मालूम होता. But जब वो teenager होता है या 17, 18, 16, 17, then he understand I can live without them. There is no problem. He can't, but he thinks he can, and he also thinks I know better than my parents. So he doesn't have that depth of experience, but he understands how things work and how things are. I can earn money, I can do this, I can go out. So then the first thing he does is to find faults in the parents. They are not doing this, they are not, because now he understands what is to be done. Similarly for devotees, when our teenage comes, we become a little mature, then we start finding faults in others, especially the senior ones, because we see, oh, this is the standard, this is to be done. But they don't have experience and also proper understanding to see a 360-degree view rather than a narrow view. So if we see faults, then problem happens that our own spiritual growth वो रुक जाती है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर मूड में डिवोटी के साथ करें. कल या परसों मुझे किसी ने मैसेज भेजा, डिवोटी ने, कि आई डोंट रिमेम्बर. सो दैट मैसेज वाज कि जिस भक्त से अगर हमें देखते हैं कि किसी भक्त से हमारी बनती नहीं है, और बिकॉज ऑफ माय पुअर कॉन्शियसनेस, तो क्या हम उससे अलग रहना चाहिए ताकि
जब तक हम प्यूरिफाई ना हो जाए उसको टॉलरेट करने के लिए. So I don't know who's tolerating whom, so like this, because we are seeing faults in others, we are unable to see our point of view, but we see, fault in others. Of course, to that devotee, I replied ki it is better to mend relation like in a family and not have such, thing uh, with the devotees that, and back of the mind, I am thinking I am tolerating him. Huh? Rather, after some time, few years, we'll find how everybody around us tolerated us, like this. So, इसीलिए भक्ति के अंदर अगर हम रहते हैं तो simplicity is is very much required. और simplicity का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ही simple हूँ और बाकियों में मैं crookedness देखूं, बल्कि simplicity का मतलब होता है कि मैं स्वयं भी मेरा मन simple है और मैं बाकियों में भी simplicity देख रहा हूँ. They may not be simple, but I am seeing simplicity in them. Oh, he's doing out of this. Oh, he's very nice. He or she is very good. Like that. Because यही simplicity का मतलब है. Simplicity doesn't mean I follow some moral codes and I feel बाकियों को भी वही feel करना है. This is not simplicity. The narrow definition of simplicity. So simplicity means I am simple and I see others also as simple. है ना? So हम दूसरों में कमियां क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो सारी कमियां हमारे में हैं. तभी देख पाते हैं. अगर हमारे में कमी नहीं है, अगर मुझे पता ही नहीं चोरी क्या होती है, तो हाउ कैन आई नो समबडी इज डूइंग स्टीलिंग, है ना? लाइक दिस मोर सटल लेवल वी कैन सी. सो इसीलिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड दैट इज व्हाट प्रभुपाद वो बता रहे हैं किस तरह से कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, दे आर नेचुरली सिंपल हार्टेड. दे नेचुरली फील टू सरेंडर एंड दैट हेल्प्स देम grow in the spiritual life. So each, both men and women, they have some advantage and disadvantages due to the body they have. None of them, nobody is male, nobody is female, they are soul. But for whatever we have got here, so we should know and the strength or our weakness, and then that acharya is showing us it is the strength, weakness, and how there we may say men are more philosophical nature, this that, but that doesn't help in bhakti. भक्ति में क्या हेल्प करता है? लेवल ऑफ सरेंडर एंड सिंप्लिसिटी, लाइक दिस. सो वी कैन अंडरस्टैंड. अगर हमें मांगना पड़े तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसे सिंपल हार्ट दे, सिंप्लिसिटी दे, सरेंडर दे, है ना? rather than कि हम बहुत विद्वान बन जाएं, बहुत अच्छा हो, है ना, और मैं दुर्वासा की तरह जिसको जो मेरी तरफ गलत देखे मैं उसको भस्म कर दूं, और जिसको जो अच्छा करे, मेरी सेवा करे, उसको मैं वरदान दे दूं. सो वी शुड नॉट फील लाइक दैट कि हमें ऐसा बनना है, Durvasa Muni jaise, but we have to, have a heart like Draupadi, Uttara, Kunti Maharani. They're wonderful, wonderful devotees of the Lord. ये तो 8:15 ही हो गए. So like this, we can see that these are very special devotees of Lord. और ये भगवान के लीला में जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, कि वो कितना भगवान के नजदीक होंगे कि वो आके भगवान के इतने क्लोज पार्षद बन के ये रोल प्ले करते हैं. तो इसीलिए ये जो प्रार्थना है कुंती महारानी की, ये तो एक बुक के रूप में भी अलग से पब्लिश हुई हुई है इस्कॉन के अंदर, क्योंकि जो प्रभुपाद ने लेक्चर दिए थे इन श्लोकों के ऊपर, दे आर वंडरफुल लेक्चर्स. आई थिंक कल परसों रोनी प्रभु वाज सेइंग ही इज हियरिंग Kunti Maharani's lectures, Prabhupada, and they are very, very, very wonderful. So तो आप लोग सब सुन सकते हैं. रानी प्रभु आप भागवतम वाले ग्रुप में वो उनके लेक्चर्स की वो सीरीज डाल देना कि वो सीरीज कहाँ पर है, तो भक्त भी सुन सकते हैं, है ना. और तो ये जितना भी चरित्र है कुंती महारानी का, प्रभुपाद calls her the most intelligent lady, I think something like that in the universe, like this. तो इनके जो भाव है कुंती महारानी का, तो भाव हमें चाहिए, किस भाव से वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और क्या भाव है, आगे पढ़ेंगे हम. और आप पाएंगे कोई भी भक्त इस भाव से प्रार्थना करने से डरता है यूजुअली, है ना. So we can see the elevated, stature of these advanced devotees. They are advanced devotees, and then only Krishna brings them in his own pastimes. जब भगवान लीला करने आते हैं नर लीला के लिए, तो इन महान आत्माओं को अपने साथ लेकर आते हैं कि आप चलिए साथ में, like this. So this is a special benediction, like this. So
प्लीज रीड दिस प्रेयर्स केयरफुली, और ये क्लास खत्म होने के बाद भी आप पढ़ेंगे, हाँ, रिवाइज करेंगे तो आपको नई नई चीजें पर पार्ट, हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, इतना स्टडी से नहीं पढ़ते, पर अगर आप इसके बाद ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, हाँ, मोर यू थिंग्स विल फाइंड इन द सेम वर्सेस एंड purports. Hare Krishna. So if anybody has a question, we can take. Otherwise, we'll end the class now. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, I had one. Yes, Asim, Prabhu. You Sorry, Prabhu. Carry on, please. you asked Prabhu first. No, just प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी बस मेरा एक छोटा सा डाउट था कि जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अश्वत्थामा जी, तो मतलब उसमें भगवान तो उसको बाहर से भी कट कर सकते थे, मतलब व्हाई डज ही मतलब गो इनसाइड द वूम एंड प्रोटेक्ट द जो सन परीक्षित महाराज, मतलब ऐसा कैसा क्यों, मतलब ही कैन कट द वेपन फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, तो अंदर जाके ही क्यों उनको प्रोटेक्ट करते हैं वूम में? आपको मालूम है कि एक बार वो पास टाइम है अकबर और बीरबल का, और अकबर ने भी यही सवाल पूछा था प्रभु जी बीरबल से कि जो आपके भगवान हैं, ये क्या भगवान है जो कभी पक्षी पे चल के भरे आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, इनके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि भाई वहीं बैठे बैठे कर दें, मतलब वाई वाई योर गॉड हैज टू रन हियर, ये अकबर ने सवाल पूछा था। तो बीरबल ने बोला ठीक है, जब समय आएगा तो जवाब दूंगा। तो उसके बाद बीरबल ने क्या किया कि एक बार उनके जो ही हैड ए ग्रैंडसन और सन, को बच्चा था उनका अकबर का किसी रानी से, तो छोटे बच्चे को लेके वो एक बार नौका नौका पे घूमने गए किश्ती में, पॉन्ड के अंदर, है ना। और फिर वो जो बच्चा है वो मतलब एक डॉल को उन्होंने बच्चे के रूप में छोटा बना दिया, रैप करके पेपर उसमें क्लॉथ के अंदर, और जब वो नौका विहार कर रहे थे तो बच्चे को पानी में फेंक दिया। देन इमीडिएटली यू नो दे सेड ओ बच्चा गिर गया, देन अकबर इमीडिएटली जंप्ड इन द वाटर एंड you know he was very upset with बीरबल, बट जो वो उन्होंने हाथ में वो डॉल उठाई तो ये समझ गए, सो ही वाज वेरी अपसेट कि क्या किया। तो तब बीरबल ने जवाब दिया, मैं तो छोटे में बता रहा हूँ आपको, तो तब बीरबल ने जवाब दिया कि कैसे आप किसी सेनापति, किसी आपके साथ असिस्टेंट थे, सेना थे, क्यों आपको क्यों छलांग मारी, आप किसी और को बोल देते। तो he says he was my son, so he says God also treats us like this, है ना। So he can do, but he wants to serve himself. अब प्रभु जी अब वो चैरियट था, जैसे अर्जुन का चैरियट था, है ना, उनको तो चैरिटर बनने की जरूरत नहीं है, वो तो दारुका को बोल सकते थे अपने चैरिटर जो उनका द्वारका में है ना। किसी भी और भी कोई रथी होता उसको शक्ति दे सकते थे, जैसे अर्जुन को शक्ति दे दी कि इन सबसे भीष्म से और इन सबसे लड़ लें, है ना, उन्होंने शक्ति दी ना उसको। जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने बोला, पहले अर्जुन को बोला कि तुम उतरो पहले, फिर मैं उतरूंगा। जब अर्जुन उतरे उसके बाद जब कृष्ण उतरे सारा रथ जल गया, बिकॉज सच पावरफुल वेपन्स वर थ्रोन, है ना। सो पर वो किसी और के थ्रू भी करा सकते थे, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि ये कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, है ना, बिकॉज लॉर्ड वांट टू सर्व हिज प्योर डिवोटीज एंड प्योर डिवोटी वांट टू सर्व लॉर्ड। तो ये एटर्नल कंपटीशन चलता है दोनों के बीच में प्रभु जी। तो यही यही जो रस है, यही रस है प्रभु जी भक्ति रस का, कि द लॉर्ड वांट्स टू सर्व डिवोटीज एंड और लॉर्ड वांट टू ग्लोरीफाई डिवोटी एंड द डिवोटीज दे वांट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। So for pure devotees, Krishna himself takes care. जैसे देखते हैं प्रभुपाद गए, उनको जलदूत में 2 हार्ट अटैक आए, then he had a dream, है ना, कि कृष्णा is rowing the boat and all the जितने भगवान के बाकी इनकारनेशन है वो भी हैं, and समुद्र शांत हो गया, and he says don't worry, है ना। उनको आने की जरूरत तो नहीं थी, वो वैसे ही बोल सकते थे अगले दिन समुद्र ठीक कर दिया भाई, है ना। बट these things show personal interaction with the devotees like this. तो दिस इज हिज पर्सनल डीलिंग, दिस इज हिज नेचर। इसीलिए नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना बहुत जरूरी है, सो वी अंडरस्टैंड कि कृष्णा में क्वालिटी क्या है। और भागवतम पढ़ना भी, भागवतम से भी वी कैन सी कृष्णा बुक भागवतम कि कृष्णा में क्वालिटीज क्या है, क्योंकि भगवान की क्या क्वालिटीज। सो दिस इज हिज क्वालिटी, दिस भक्तवात्सल्य, दिस इज वेरी यू नो क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी लाइक दिस। थैंक यू प्रभु जी। और एक आपने बोला था कि लोकलाइज और ऑल परवेसिव में वी शुड मोर फोकस ऑन लोकलाइज बिकॉज ऑफ द सोर्स, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे बना, क्या करते हैं? मैंने तो आपको उदाहरण दिया था कि जैसे भगवान जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो ही हैज 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन, एक भगवान के रूप में, एक अपनी एक्सपेंशन परमात्मा के रूप में, और एक ब्रह्म ज्योति के रूप में।
है ना। तो कोई ये कह सकता है कि नहीं, जो चीज घट घट में बसी है, जैसे लोग बोलते हैं राम जो है घट घट में बसे हैं। अब कोई कह सकता है जो घट घट में बसे हैं वो भगवान का जो मैनिफेस्टेशन है, वो लोकलाइज से बड़ा है, क्योंकि लोकलाइज तो वो है जो एक जगह खड़ा है, पर जो घट घट में बसा है ना, वो तो ज्यादा भगवान का एक इट्स ए हायर यू कैन से मैनिफेस्टेशन, है ना। बट ऐसा नहीं है, लोग ऐसे सोच सकते हैं सेंटिमेंट में होके। बट इसीलिए मैंने आपको सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य देव सूर्य ग्रह के अंदर बैठे हैं, उनका प्रकाश सब जगह है, वो भी घट घट में है। तो आप बताइए प्रकाश ज्यादा जरूरी, हु इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रकाश और सूर्य देव? सोर्स आपने बोला था, सोर्स इज मोर, कहाँ से आ सूर्य रहा है? देव ना, तो सोर्स ही सूर्य देव, जो जो सारा सूर्यदेव कह लीजिए, है ना। तो सारा जो स्रोत है सूर्य का वो सूर्यदेव से आ रहा है ना। तो अब सूर्यदेव इज इंपॉर्टेंट और सूर्य का प्रकाश इज इंपॉर्टेंट। सूर्य देव, ऑफ कोर्स। सूर्यदेव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज द पर्सन, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम, ही इज द स्त्रोत्र। सो जब हम स्त्रोत्र के पास जाएंगे, व्हेन वी आर डीलिंग विद स्त्रोत्र, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज विभूति। वो तो सूर्यदेव की विभूति है ना, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, इतना प्रकाश है, इतने हजारों लाखों सालों से कभी नहीं हुए हैं, लाइक दिस, ये उनकी विभूति है। तो विभूति कैन इम्प्रेस अस टू नो मोर अबाउट सूर्य प्लैनेट और सूर्य देव, है ना। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, सो बिटवीन भगवान परमात्मा एंड ब्रह्म ज्योति, इट इज अ भगवान हु इज द स्रोत ऑफ परमात्मा, हु इज द सोर्स ऑफ ब्रह्म ज्योति, इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक दिस। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, Ankur Prabhu has a question, Prabhu. हु? Ankur Prabhu. जी प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमने फर्स्ट श्लोक आज पढ़ा था उसमें एक लाइन आई थी जिसमें कहते हैं द लिविंग एंटिटीज आर एप्ट टू फॉल डाउन अंडर द क्लचेस ऑफ मटेरियल नेचर बट द लॉर्ड इज नेवर लाइक दैट। करेक्ट। सो इसी चीज को सोचते हुए जो भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु रूप में जो लीला है उसमें एक दो बार ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान अपने भावावेश में होते हैं, तो मतलब ऐसा प्रसंग है कि भविष्य, मतलब वो आकाशवाणी होती है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू दिस, अभी इस चीज का समय नहीं है, जैसे वो वृंदावन के लिए। तो करेक्ट। उस चीज को इससे रिलेट करते हैं या दैट इज, आई मीन, नहीं क्योंकि प्रभु ही जी, इज लॉर्ड तो मतलब ही नोज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करें उसको? नहीं तो उसमें जो भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड पीएचडी, बिकॉज टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कमिंग एज ए, सी एक तो भगवान जब नरलीला करते हैं वही समझ में नहीं आती लोगों को, लोग उसी पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये रास रास क्यों कर रहे हैं, ये मक्खन क्यों चुरा रहे हैं, भगवान को चुराने से क्या लेने देना, है ना। वो तो नारायण है, सब उनके पास आ रहे हैं, इनको चुराने से क्या लेने देना, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड नो। एंड तो इसीलिए जब, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। अब उसके भी ऊपर ये है कि जो वो भगवान भक्त बन के आए, अब क्या हो रहा है, अब वो एक नया, एक उसमें एक और फर्दर एक यू नीड ए मोर प्योर एंड सटल कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग, लाइक दिस। सो वो तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसीलिए इट इज कॉल्ड पीएचडी, कि one needs to understand who is Krishna. After understanding who is Krishna, what is his nature, then you come into Chaitanya Mahaprabhu's Leela. Then you understand what is happening. कि वो किस तरह से, कि जो वो राधा रानी का जो भाव है वो लेकर आए हैं, और वो जो श्रीमती राधा रानी का भाव है वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। You know, he is not come to do any dharma sansthapanartha, is a secondary part. His internal reason is he want to taste what Srimati Radharani tastes. Correct. So he's in that mood. So what everything is facilitating that bhav. You know, whether it is the nature, the demigods, or Yogamaya, everybody is facilitating Lord's that part, like this. थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Prabhu. I think Namrasita Mataji also had a question. She had raised hand. Maybe she raised the hand to slap me. बहुत हो गया, बहुत देर बोल लिया आप। I can't find. क्यों शुरू होगी क्लास? हाँ भक्ति जी। शास्त्री, ठीक है, ओके।
You had a question? Yes, Prabhu, I had a question. So, like we talked about simplicity, right? That women are simple, and for simplicity also helps in devotion. But sometimes when we gain knowledge, we tend to become proud, and we get that sense that, oh, we know all this, we can recite all the shloka, we can refer all such things. So, how do we not become proud? So प्रभु जी, अगर हम लोग देखो, ये तो वही चीज है जिससे मैं पहले बता दें, एक बार लेक्चर में राधे श्याम प्रभु के लेक्चर में कोई पूछ रहे थे कि वो ओम ज्ञान तिमिरंधस से हो गया हमारे पास, knowledge comes but innocence goes out, you know. So it is very important to keep our innocence intact. और so ये क्या रहता है, अगर हम ठीक से प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक से जप कर रहे हैं, so then Krishna you will find inspired, spiritual master inspired, you know, Prabhupada inspires. We will hear the lectures, you know, something will pop out from the Shastra. We will understand this I'm not doing right, because the Guru Sadhu Shastra are there to guide us. But अगर हम, you know, थोड़ा ज़्यादा proud हो जाते हैं, then Krishna will arrange few things in our life where, you know, हमें embarrassment होती है, हम आगे बढ़ने में नहीं बढ़ पाते हैं, हमें frustration होती है, you know, like this. So then we can understand कि something has been tied on our ankles, वो हमसे बढ़ा नहीं जा रहा है, तब भी नहीं सुनते हैं, then he will put a little bigger bomb, you know, or he will take away the association to understand, okay, he is good enough for kindergarten, so let him remain in kindergarten for some time, you know. Depends how sincere we are, and then, you know, Krishna will arrange, you know, he arranges. So main thing is ki to have that Guru Sadhu Shastra as our guiding force, and to be very conscious while reading Shastra, when hearing Vaishnava, we should be, especially while hearing Vaishnava, we should be very conscious, because Paramatma is there in their Vaishnava heart and he's telling us something. Whatever he's speaking is good for us. Like this. Thank you. Yes. Hare Krishna. So we'll end the class now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaya cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna.